Hello everyone, very good morning to all of you. कैसे हो आप लोग? I'm sure that you must be having a good time right after exams, and this is definitely uh, interesting to know what all you will be doing. Right? आप लोगों से मैं इंटरेक्ट करता रहूंगा लाइक क्या आप लोग अभी कर रहे हो. लास्ट वीक वी डिड अ डिस्कशन ऑन what you should do, right? हम लोगों ने एक बात करी थी like what should be your plan after CA finals. So yes, आप में से काफी लोगों ने बताया था like what you were thinking, and we also discussed certain points. Okay, so part 1 जितने लोगों ने अटेंड करा था, right, वो लोग अगर आप लोगों ने this is the first time you are interacting, so part 1 video is already there, you can watch it, but I'll just quickly take you through to what we discussed the last week, right? And उसके बाद फिर हम लोग आज का जो सेशन है उसको आगे बढ़ाते हैं. So yes, those who are like speaking with me for the very first time, my name is Gunjan Shrimal, and I'm lead trainer at CampRep. CampRep is a training institute basically for providing campus preparations to CA freshers and MBA freshers. Mostly my experience is into industry. Almost for 10 years I've worked in industry. But as far as my campus training experience is concerned, yes, it is mostly I have post qualification, and after 10 years spending in industry, I started speaking with people. I mean, to my students who got the training from our institute, and it basically varies from people who have who are rank holders to people who are having 16 attempts. Right, then those students who are from Hindi medium background to those who are like very fluent in English, those who did articleship from mediocre firm, very small firm, to those who did articleship from big fours, and those who did their articleship, I mean they could not really do their articleship, maybe it is sort of a dummy sort of stuff, or maybe like they completed their articleship long back before appearing for interview. So in short, basically, and close to 1000 mock interviews I've done myself. So when I did these 1000 mock interviews of various students, I realized that there are certain things that is very important to understand, and so there are certain things जो हम believe करते हैं that you know, but that is wrong, because आप लोगों को की understanding थोड़ी सी उस तरह से develop होना important है. So this is a different kind of introduction of myself, right? So आज मैं इसी introduction को basis बना रहा हूँ that students की generally जो queries होती हैं, right, related to career, right, हम आज उसको discuss करेंगे. So basically, for our overall agenda is understanding job opportunities and various profiles. It is something very important कि आप overall opportunities को एक बार समझ लो. Okay, second, selection criteria है, companies का जो selection criteria क्या है. Part 2, obviously हम लोगों का जो रहेगा वो रहेगा campus quiz, right? Last time also we did a campus quiz. Some of you really did well in that. Today I also believe that again, like next week you will be having another part, that is part 3 of the camp what after CA finals. Quickly I'll take you through to what we discussed last time. Like there are multiple options that you people have in front of you, उसके बारे में हमने बात करी थी, और इसका शॉर्ट में हमने कंक्लूजन ये निकाला था कि आप कोई भी स्टडीज करिए, राइट, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट साथ में ये है कि आप इंटरव्यू और कैंपस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू फेस इट. यस, अगर आप सपोज कोई जीएसटी का सर्टिफिकेट करते हो, कोई इनकम टैक्स रिलेटेड सर्टिफिकेट करते हो, कोई IFRS से रिलेटेड सर्टिफिकेट करते हो, वो आपकी सीए डिग्री को सुपरसीड नहीं करेगा. सीए डिग्री विल ऑलवेज प्रिवेल. So anything which is either superseding CA degree or something which is new, right, जिसको अभी तक आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है, वो आप जरूर स्किल सेट अपने बढ़ा सकते हो. लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रिपेयरिंग फॉर योर कैंपस, राइट, बिकॉज आफ्टर एग्जाम्स यू विल नॉट फाइंड टू मच ऑफ टाइम, राइट. इससे रिलेटेड हमने काफी लंबा डिस्कशन किया था.
और फाइनली हमने इस बात पे कंक्लूड किया था कि आपको पास्ट ट्रेंड्स को एनालाइज करना है. यू शुड एनालाइज द पास्ट ट्रेंड्स and on which the companies which have participated in campus. So today we will be doing that, right? We will be analyzing the past trends of the companies, which all companies have participated, what were their selection criterias, okay, and what are the growth opportunities. Again, like it is a certainly very long discussion. अगर हम देखते हैं तो ये डिस्कशन काफी लंबा डिस्कशन है, लेकिन हम इसको ट्राई करेंगे कि cover it all these things in 1 hour plus your queries, right? Whatever queries you have. So we spoke about some good decisions people have taken, some bad decisions. So straight away now I've come down to campus plus off-campus opportunities, right? So first of all, we'll speak about campus opportunities. So in campus, we talked last time that in every attempt there are close to 12 to 15,000 chartered accountants gets cleared, right? Every attempt we get 12 to 15 fresh chartered accountants. Out of that, almost 8-9,000 appear for campus, right? And out of that, almost 50% or 60% got the job. So in those 50 to 60%, certainly, like if you want to get a package above average, yes, definitely you need to understand that for that, getting that 20 to 20%, coming in that 20% top slot, that's a basically a tricky one, right? So वो हमको थोड़ा आगे समझना रहेगा. So questions mostly what we'll be covering today is the given the number of attempts, right? What should be your strategy? Okay. You may be having different attempts, right? What should be your strategy? Okay. Articleship has an impact on your job. Yes, that is also you need to understand. Did articleship in a particular stream will get you job in that field only, right? If you've done articleship, let's say in finance, will you get job only in finance or in something else, right? This is another question. And then you may have a question related to where to work, right? In a metros, non-metro. Startup versus established company, industry versus big four, PSU versus private sector, CTC versus profile, right? These are also some of the questions that I will try to address today. These are some questions which are related to your understanding. What type of companies normally hire CA freshers? Okay, so our initial discussion is on this part. See, first of all, we need to understand that what are the companies which are hiring CA freshers, right? Please focus on this particular part very much. Second is investment banking, management consulting, right? Is there any opportunities over there? What is investment banking? Yes, this is also a question. What are the starting packages, right, in these companies? Then good to start with campus or off campus. Do we have opportunities to work outside India? Opportunity, future growth if we start with Big Four, and opportunity with foreign banks, right? So in short, if I'll tell you, this is definitely a very, very lengthy question and answer session. It's unending, right? I can do this session throughout the day, right? You can understand there are so many things. So whatever are the core points, okay, please we'll discuss on that. Otherwise, we are coming in with every Sunday we are doing the session, right? So and throughout the campus preparations plan, we do discuss it. But please try to capture the crux of some of the points so that your direction is right when you start your career. Okay, so this is the slide which tells you that these are the opportunities. Primarily, once you get qualified and you start your career, either of these 5 points, 5 areas you will start your career with. Either it will be an investment bank, or it will be a corporate or industry. Either it will be a normal bank with a firm, or IT industry, right?
So इन 5 में से आप किसी से start करोगे. There are some other areas as well, like fund accounting and all. उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे. But primarily these are the 5 areas, right? Now, just for my understanding, if you can tell me if you have already thought about it or whatever, based on your current understanding and expectations, if you can write like where you would like to start your career with. Is it IB, corporate, bank, firm, IT industry, or anything else, right? So it will give me a sense of what exactly you people think about. Okay, so we'll start in an AMC, equity research. Okay, good, good, good. All right. Analyst and then portfolio manager, M&A. Okay, great. Okay, but so in short, nobody wants to go into regular traditional areas, right? अच्छी बात है, आप रेगुलर ट्रेडिशनल एरियाज में नहीं जाना चाहते हो. तो सी दिस इज in a way is a good thought process, okay, but at the same time we need to understand what is available in the market. So is M&A available, is equity research available, is joining an AMC mutual fund, is it available, right? This is something which we need to understand. All right, so let's first start with investment banking, right? Investment banking is something which you are really looking for, right? जो भी आप लोगों के responses आए वो basically इसी के around थे. M&A, valuations, due diligence, private equity, debt syndication, right? So these are some of the areas where you should start your career with, right? Which जो आप चाहते हो कि like investment banking में हम start करें, ठीक है? So इसमें M&A is one such area, right? Indirect taxation profile, चलिए और भी options आ रहे हैं, अच्छी बात है. तो हम लोग comprehensive discussion ही करेंगे. तो आपको 2 बातें समझनी है. पहला पॉइंट ये समझना है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन में क्या क्या चीजें आती है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट ऑल थिंग्स आर कमिंग इन अंडर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. सेकंड आपको समझना है कि लाइक डू यू हैव आइडिया अबाउट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और नॉट. And third, you need to understand whether the opportunities are available or not, right? So I'll start with a question, right? सबसे पहले I'll ask you a question, और this question has a prize, right? इस क्वेश्चन के लिए एक प्राइज है. तो क्वेश्चन मैं आपको चैट बॉक्स में लिख देता हूँ और I'll just ask you also. Right. So the question basically is that how do you value a startup? Yes. So those who would like to give the answer, yes, they can just. So I'm just giving you 30 seconds to think about it. Please think, and then I'll take a quick answer of that. All right. So I got 2 answers. One is projections and one is we value based on following factors. Okay, what are those factors? How do you value a startup? Yes, very common question. Many a times companies have asked this question. Yes. So yes, you have already studied about the method in your financial management.
Yes, so past profit, net assets, EPS, PE, capital mix. Okay, you can send to all also instead of sending to me. Discounted cash flow method will help out in valuing startup. Okay, fantastic. Right. So basically, we have got the right answer. Harsh. Okay, well done, Harsh. Basically, DCF. Yes. So please remember, if this question comes, that how do you value a startup? You should say that although there are various methods of valuation of startup, the most common method is basically discounted cash flow method. Yeah. So discounted cash flow method is the most recognized and most frequently used method of valuation. Okay, you know this is an era of startup. Either companies are funding the startup, or they are investing in a startup, or they want somebody wants to work for a startup, right? So ये पूरा एक startup का time चल रहा है. तो ऐसे टाइम पर आपका इंटरव्यू हो भी सकता है स्टार्टअप में, कोई एस्टेब्लिश स्टार्टअप हो, फॉर एग्जांपल and the past campus companies like Swiggy, Zomato, Ola, right, Flipkart, they have participated. Okay, so they may ask you these kind of question, and since you people have interest in investment banking, so DCF is one such thing, right? So this is related to skills, right? Now, second part is what exactly happens in this. Yes, so in this one, investment banking, in short, if you talk, if you think, it is basically about money management. Yes. So either you are basically arranging the money, or you are basically investing the money. There are only two things. One is buy side, one is sell side. So आप लोगों को क्या करना है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में डीप में पढ़ना है, तो जस्ट रीड अबाउट व्हाट इज बाय साइड एंड वन इज सेल साइड. यस. और लास्ट में जब मैं आपसे कैंपस क्विज करूंगा, तो आई विल आस्क यू दिस क्वेश्चन आल्सो, दैट व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट buy side and sell side. Okay, so this is we are talking about the profile. For example, I have a company, right? I need 100 crores, right? I come to you and ask you, okay, please arrange 100 crores for me, right? So either you will arrange through equity, या फिर आप arrange करोगे debt के through. तो आप इनमें से जिसके भी through arrange करते हो, right? So आपका you will be classified under as one of the investment bankers, right? अगर आप equity के through कर रहे हो, तो you may be going to private equity investors, right? Private equity investor के पास जाते हो आप, so they are also coming under investment banking, because they also will do some kind of due diligence that should we invest in this company or not invest. So these are some of the areas. So that's why we have said about private equity. One process in this one is due diligence, right? Another process in this is valuations, right? आपने Shark Tank देखा है, like Shark Tank में क्या बोलते हैं वो, I want 10% equity for 100 crore of valuation. So this 100 crore is what? 100 crore is the valuation, and how do you compute it? Basically, we have just talked about it. Clear है आप लोगों को? So this is the profile which has all things which are related to money, right? हम लोग जब buy side और sell side का discussion करेंगे, तब आपको और clear हो जाएगा. Right, so इंडिया में अगर हम बात करते हैं, तो जितने भी फॉरेन बैंक्स हैं, they have their investment banking department. सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, मैरिल लिंच, बार्कलेज, राइट, सभी के इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिपार्टमेंट है. इसमें इतना रिच डिपार्टमेंट क्यों है ये? Why this department is so rich? Because they charge percentage of total deal, right? अगर डील होती है सपोज $1 billion की, तो $1 billion का एक परसेंटेज बेसिकली दे चार्ज. तो इसलिए ये एक रिच डिपार्टमेंट है, और इसमें जो लोग काम करते हैं, राइट, दे ऑल्सो गेट अ वेरी हाई सैलरी प्लस वेरी हाई बोनस. इसमें बोनस भी उतना ही होता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो और यही एक कारण है कि आप जितने देखोगे इंडिया में टॉप 20 स्कूल्स, राइट, IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कोलकाता, वहां के जो फाइनेंस के पास आउट्स हैं, दे वांट टू स्टार्ट देयर करियर विद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. यस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऑन ऑल CFAs, राइट, CFA जिन लोगों का लेवल 3 क्लियर हो गया है, वो लोग भी चाहते हैं कि हम लोग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अपना करियर स्टार्ट करें. तो ये क्लियर है आपको? बेसिकली किसी स्टार्टअप को फंड करना, किसी स्टार्टअप में पैसे लगाना, किसी स्टार्टअप को
या किसी एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड रेज करना, राइट, इधर इन द फॉर्म ऑफ डेट, इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी. सो ऑल दिस, कोई मर्जर होना, कोई एक्विजिशन होना, लाइक वोडाफोन और आइडिया, इनका मर्जर हुआ. सो किसने करवाया? ये बेसिकली अगेन इन्वेस्टमेंट बैंकर. उन्होंने वोडाफोन को भी गाइड करा, आइडिया को भी गाइड करा, और पूरी डील में उन्होंने एक एक पार्ट को देखा कि लाइक, क्योंकि इट इज नॉट ओनली फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, इट इज अबाउट नेटवर्क ड्यू डिलिजेंस, इट इज अबाउट कस्टमर ड्यू डिलिजेंस. सो दैट्स व्हाई लाइक फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बैंकर केवल फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्टेड नहीं होती है, उनसे बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्ट की जाती है. मतलब दे विल नॉट आस्क यू क्वेश्चंस दैट हाउ डू यू अकाउंट फॉर दीज ट्रांजेक्शंस. आपसे इस तरह के क्वेश्चंस होंगे कि लाइक व्हाट इज द बिजनेस मॉडल ऑफ स्विगी, राइट, स्विगी का बिजनेस मॉडल क्या है, राइट. अगर आपको स्विगी को वैल्यू करना है तो आप किसके बेसिस पे वैल्यू करोगे? अगर आपको बेसिकली बिजनेस मॉडल, आप आईपीओ सपोज आए, राइट, सो आपको कौन सा आईपीओ बेस्ट लगा अभी जो आया? सपोज कोई भी एक आईपीओ के बारे में आपने बताया, सो दे विल आस्क यू दैट व्हाई दैट आईपीओ गॉट फेल्ड. जैसे पेटीएम का आपने सुना होगा कि आईटीएम, पेटीएम हुआ, नायका हुआ, इनके आईपीओस फेल हो गए. सो व्हाई दे गॉट फेल्ड? सो दे विल नॉट एक्सपेक्ट कि केवल आपने रिपोर्टिंग से रिलेटेड आपकी अंडरस्टैंडिंग, दे वांट मोर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मोर ऑफ बिजनेस नॉलेज. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो आप काफी अच्छे से पढ़ते हो, बट जो बिजनेस नॉलेज है वो भी आपको गेन करना रहता है इसमें, राइट. सो आई थिंक इन शॉर्ट you are clear about what is the role of an investment banker, right. Then second is like which all companies normally hire. So Indian banks हैं, उनके भी investment banking department है. Then there are some private equity investment, जैसे Wipro for example. Okay, so Wipro has a huge cash lying in their balance sheet. Reliance, they have huge cash lying in their balance sheet. ना उस कैश का क्या करें, राइट. अगर आप उसको एफडी में रखते हो, अगर यू विल हार्डली गेट एनी रिटर्न्स. इफ यू विल इन्वेस्ट इन मार्केट्स, राइट, मार्केट में आपको 10 to 12% रिटर्न आता है. सो बट इफ यू इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स, ओके, सो डेफिनेटली द रिटर्न्स वुड बी हाई. क्या लगता है आपको कि एक स्टार्टअप एनुअली कितना रिटर्न देता होगा, राइट? What is the return that a startup normally provides? Any idea? Although it varies a lot, but what is the expectation normally? 20 to 25%. Very good, yeah. Fantastic. So normally एक expectation होती है कि if I invest 100 rupees in any startup, आज मैंने 100 rupees किसी startup में लगाए, तो मेरा जो एक expectation है, वो expectation है that it will get doubled in 3 years. 3 साल में डबल हो जाए, राइट, ये एक्सपेक्टेशन है. तभी तो मैं इतनी रिस्क ले रहा हूँ, राइट. अदरवाइज मुझे रिस्क नहीं लेनी है तो मैं तो उसको सिंपली फिक्स्ड डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, बिकॉज आई वांट अ हायर रिटर्न. ओके, आई एम टेकिंग हायर रिस्क. सो कंपनीज क्या करती हैं, अपने जो भी उनका एक्सेस फंड होता है, उस एक्सेस फंड का वो एक फंड बना देती है, और उस फंड को बोलते हैं कि लाइक प्लीज इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स. तो ऐसे बहुत सारे फंड्स, छोटे छोटे फंड्स बहुत सारे हो गए इंडिया में, राइट. आप चाहो तो ये फंड्स भी ज्वाइन कर सकते हो. लेकिन इसमें एक पॉइंट ये रहता है कि दी टीम साइज इज वेरी लिमिटेड. किसी प्राइवेट इक्विटी फंड की आप टीम साइज देखोगे तो देर आर 8 people, देर आर 10 people, देर आर 12 people, 15, 20, और उसमें भी दे टेक अ मिक्स ऑफ वेरियस पीपल. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि देर इज अ IT company, okay, which is working on artificial intelligence, okay, and I want to invest maybe 10 crores in that company, right. Now you should have that technical ability also to assess that. तो इसलिए IITians को आपने देखा होगा कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में you will find a lot of IITians also, people who are having domain knowledge, they are also working. So यहाँ पे competition इस तरह से काफी हो जाती है, ठीक है. तो दिस इज वन पार्ट ऑफ द नॉन ट्रेडिशनल प्रोफाइल. जो हम लोग एक ट्रेडिशनल प्रोफाइल्स की बात करते हैं, ये थोड़ा सा नॉन ट्रेडिशनल प्रोफाइल है. इसी से रिलेटेड और प्रोफाइल्स भी है. लाइक आई डिड माय
industrial training from Bank of America, right? I was into foreign exchange department, right? So foreign exchange department has three department within itself. One is front desk, second is middle desk, so mid office भी बोलते हैं, और third one is back office, right? ऐसे तीन ऑफिस थे, front, mid and back. तो जो front office होता है basically, front office is basically where the actual traders decides that at what rate I want to execute the deal, right? तो इसको आप थोड़ा थोड़ा स्टॉक मार्केट की तरह ही समझ सकते हो. ऐसे ही जैसे स्टॉक मार्केट होता है ऐसे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है. तो आपको डॉलर्स खरीदने बेचने हैं अगर, तो उसके लिए बेसिकली ट्रेडर्स होते हैं, ओके. और ये ट्रेडर्स भी लाइक अगेन लाइक पीपल लाइक यू, पीपल हु आर हैविंग वेरी गुड आइडिया अबाउट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. आपने पढ़ा है फॉरेन एक्सचेंज के बारे में, करेक्ट? सो इसमें भी पैसा बहुत है, right? There is a huge money in this profile as well, right? So treasury is जिसको बोलते हैं, treasury department of banks, right? So they manage this particular. So although this department doesn't come under investment banking, but yes, this is again a department which is there again out of 100 people working in front desk. You will find maybe 5 or 10 out of them are chartered accountants. ठीक है, इसका मतलब ये है कि सीएस काम तो कर रहे हैं वहां पर भी, लेकिन अगेन द परसेंटेज इज वेरी लिमिटेड. ठीक है. And apart from this, you will find stock markets, right? So those who want to build their career with mutual funds or any kind of equity research department, there is another opportunity, and then there is opportunity for trader also in that particular area. Now in all these, right, जो भी हम departments की बात कर रहे हैं, investment banking and stock market, you will find that there is a definite competition from MBS. ठीक है, यहाँ पर MBS से आपको बहुत कंपटीशन मिलती है. ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं इससे रिलेटेड, कि इफ देयर आर एनी वैकेंसीज and what are the approach basically to apply for these kind of roles. Okay, what should be your approach? So the first thing to understand is that which is a hard reality. थोड़ा सा इसको डाइजेस्ट करना मुश्किल है. ठीक है, और वो मुश्किल बात यह है कि इंडस्ट्री डजंट रिकॉग्नाइज चार्टर्ड अकाउंटेंट एज ए for investment banking jobs and equity research roles. Chartered accountants are mostly recognized for audit, accounts, and taxation. This I think you can understand it because most of your articleship experience is into accounts, audit, and taxation, and that's the reason companies आपको इन्हीं roles के लिए hire करती हैं. लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंक, इक्विटी रिसर्च, क्योंकि नॉर्मली किसी का भी वर्किंग एक्सपीरियंस इससे रिलेटेड नहीं होता है, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू हैव इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रिलेटेड एक्सपीरियंस इन योर आर्टिकलशिप? हाउ मेनी ऑफ यू हैव इक्विटी रिसर्च रिलेटेड एक्सपीरियंस इन योर आर्टिकलशिप? मे बी 5% ऑफ यू और 1% और मे बी नो वन, ये भी हो सकता है. सो दैट्स व्हाई जो रिकॉग्निशन है ओवरऑल इंडस्ट्री का वो ये है कि लाइक सीएस आर फिट फॉर कंप्लायंसेस रूल्स. And for these kind of roles, they prefer in MBAs, right? And then a cycle goes on. Cycle कैसे इंडस्ट्री में cycle कैसे रन होती है? Like अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो मैं अपने अंडर में उसी रोल के लिए किसको हायर करूंगा? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करूंगा, बिकॉज आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट? सो इसी तरह से अगर कोई MBA है, सो वो क्या करते हैं? वो भी बेसिकली यही करते हैं. वो किसी MBA, फिर वो नेक्स्ट बैच भी जो आती है वो भी MBA की आती है. तो दिस साइकिल गोज ऑन. तो अभी ये वही साइकिल चल रहा है जिसमें लाइक मोस्टली देयर आर MBA फाइनेंस एंड CFAs, और वही जो नेक्स्ट बैच को लेकर आते हैं. सो नेक्स्ट बैच भी वो उसी तरह से रहती है. तो इस साइकिल में एंट्री लेना इज स्लाइटली डिफिकल्ट, और आपको वही तरीके समझने हैं कि लाइक व्हाट आर द वेज, ओके, जिसके थ्रू आप इसमें एंट्री ले सकते हैं.
So first one is going for higher studies, right? Now this is definitely a difficult point. आप बोलोगे already इतना पढ़ लिया, अब नहीं पढ़ना है, ठीक है? लेकिन फिर भी राइट, कई लोग होते हैं जिनकी इच्छाएं होती है. मेरे भी पास्ट के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं कि हम आगे की स्टडीज करेंगे. कई लोगों ने करी भी है, राइट. सम ऑफ देम हैव डन CFA. सो CFA करने का बोला. काफी लोगों ने बोला कि लाइक हम लोग कई लोगों ने MBA भी किया है, राइट. ऑल्दो ये एक अलग डिस्कशन है कि हायर स्टडीज में जाना है नहीं जाना है. But yes, this is a way. Okay, second is to look for new startup funds. New startup funds मतलब जो small size funds होते हैं, right? Who cannot hire people from these kind of colleges. उनका बजट नहीं होता है, क्योंकि इसमें नॉर्मली आप देखते हो स्टार्टिंग पैकेजेस ऑलमोस्ट 25 lakhs 30 lakhs. So there are new funds who are not able to afford these kind of graduates. So in that case, yes, definitely you will have a chance. Okay. How will you find new funds? Very easily. Like I'll send it on the Telegram group, some of the names. You can easily find it on the Google, that if you search that what are some of the prominent names in the startup segment, you will find it. But yes, anyways, I'll send in the Telegram group. Those who do not have the link for Telegram, yes, I'll send them. They can join, right? I'll send it in the group. So that is another process. Third one is joining tier 2 CA firms, right? Tier 2 CA firms, like for example, there is a firm in Mumbai called as Bansi Mehta and Company, right? So these are those firms who have working in the finance area as well. I mean, they do some kind of IPOs as well. They help in raising capital for the companies, right? So ये वो firms हैं जो आपको भी पता होंगे. आपकी सिटी में भी ऐसी firms होती हैं जिनका finance में exposure अच्छा होता है, right? They do debt raising, fundraising, equity also. Okay, I'm sure. मतलब in your city you must be knowing that which all firms are famous for finance related work. So you can join those companies as well. अब इसमें एक पॉइंट आता है कि if you will join over there, right, the package will not be that great. And this is the point where most of the people backed out. अगर आपको एक चॉइस मिलती है कि लाइक यू वांट टू स्टार्ट करियर विद, जैसे आपने मेंशन किया था M&A और private equity or equity research and all, and if you realize that I'm getting 7 to 8 lakhs for that role compared to my friend who is having maybe 7 attempts and he is joining PwC SDC and he is starting his career with 11 lakhs. So that is the point where most of the people actually change their mind and then they go for traditional fields because the package is very high over there. So here the problem is not of opportunity, the problem is of package. Is it clear to everyone? This is very important. यहाँ पर आपको एक trade off करना है, trade off between package and profile. You will get something related to investment banking, maybe fundraising, maybe fundraising for debt, maybe domestic fundraising, maybe equity related fundraising, maybe equity research, maybe financial modeling, maybe valuations, but not in the large firms, not in the large banks like Goldman or Standard Chartered. वहां नहीं मिलेगा at this stage, except if you are a rank holder. ठीक है, मैं मतलब बहुत frankly आपसे बात कर रहा हूँ because रियलिटी आपको पता होना चाहिए.
रियलिटी नहीं पता होती है तो फिर हम लोग बहुत सारे डिसीजंस अपने अपने हिसाब से लेते रहते हैं, राइट। सो इसलिए इम्पोर्टेंट ये है आपको कि प्लीज प्लीज मेक इट वेरी क्लियर दैट यू हैव टू मेक अ ट्रेड ऑफ हियर। यस, कितने लोग हैं जो ट्रेड ऑफ करने के लिए रेडी, मतलब हु वांट्स दैट, यस आई एम फाइन विद पैकेज, आई एम फाइन, आई वांट प्रोफाइल नॉट द पैकेज, ऐसा है क्लास में? कितने लोग हैं जो इस तरह के डिसीजंस लेने वाले हैं? यस, एनीवन? हर्ष, जिन्होंने पहले लिखा था। 8 to 9 lakhs if there is a huge increment in these AMCs. Okay. Yes, increment is definitely there. See, like the profile, if you have a good profile where there is a lot of learning, so forget about then growth. Growth anyway has to come, right? वो जो 3 idiot वाला जो फंडा है वो सही है इस केस में। लाइक अगर आपको, आपके पास स्किल्स आ गए, सो स्किल्स आ गए तो फिर अब आपको पैकेज देखना नहीं पड़ेगा, राइट? देन देयर विल बी ए कंटिन्यूअस डिमांड ऑफ योर्स। सो मेरा पर्सनल सजेशन जो मैं हमेशा रहता है वो यही रहता है कि आप प्रोफाइल के ऊपर फोकस करो, पैकेज के ऊपर थोड़ा सेकेंडरी फोकस होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी आगे के डिस्कशंस और करेंगे, उसमें आपको और कहानी क्लियर होती जाएगी कि हम लोग कहाँ पर आकर रुक जाते हैं, राइट? क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। सो yeah, so this is another option. So you will find, right? But don't just restrict yourself on Goldman and these kind of companies, Standard Chartered. Eventually, you may get into it, okay, in future once you have a relevant experience. But you have to start with these kind of firms where the package will be low, but you may get the profile of your choice. Another example is Anrathin company, right? In the equity research segment, it is again an Indian firm. Okay, so in India-based firm, domestic firm, where again there will not be high packages. But let's say if you want to make your career in uh, stock market, so here is an opportunity for you. So these kind of firms. Okay, today you will not get into the front end department of, let's say, Credit Suisse or something like that. But once you have relevant experience, tomorrow you may get similar opportunities, right? So these are domestic firms, domestic banks, which one can target. In the last batch of mine, one of my student got selected for SBI Capital Markets, and he started his career with debt fundraising, right? उनका काम basically डेट साइड में फंड रेजिंग करने का है। ओके, सो ऐसा नहीं है कि लाइक नोबडी गेट्स एन अपॉर्चुनिटी, यस देयर आर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। इसके बाद दो प्रोफाइल्स और आती हैं, राइट, जिनमें आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। वो होती है ड्यू डिलिजेंस एंड वैल्यूएशंस। ये बेसिकली आपको बिग फोर में अवेलेबल हो जाती हैं। आई मीन ऑलमोस्ट 8-10 students from my previous batch, they are working for valuations and due diligence. So valuation and due diligence are those profiles which are the first step towards investment banking. Are you getting my point? These are the first step towards investment banking. मतलब this is a आप एक बार ड्यू डिलिजेंस डिपार्टमेंट में आपने स्टार्ट करा, धीरे धीरे करके आप ग्रो करते हो, फिर आपको वैल्यूएशंस दिया जाता है, फिर वैल्यूएशंस में आप ग्रो करते हो, धीरे धीरे करके आपको कोर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मिलने लग जाती है। So if you and due diligence, I have seen people who have multiple attempts also. उनको भी मिला है ड्यू डिलिजेंस। क्लियर है आप लोगों को? So what are the various ways to approach these kind of jobs? So broadly, is it clear? If you have any question, yes, let's discuss that.
is it easy to enter in IB without having rank? Yeah, I already mentioned about that, right? IB में आप definitely entry ले सकते हो without rank through all these routes जो मैंने आपको बताया. अगर आपके पास rank है, so rank है तब तो आपको definitely बड़ी banks और बड़ी profiles target करनी चाहिए, क्योंकि rank holders को लोग preference देते हैं. तो तब तो आप directly foreign banks से start कर सकते हो if you have a rank. Okay, so और कोई क्वेश्चन हो तो आप बताइए. How to approach investment banking? This is in short, like this is the and this is all about, right? इसके बाद आप कितना भी स्टडी करो और भी कुछ आप बातें करो, but the bottom line is this only. ठीक है. इसमें एडिशनल पॉइंट क्या है? एडिशनल पॉइंट ये है कि like if you really want to start your career, then you do not have to be dependent on only on campus. आपको अगर आपका करियर आईबी या मैनेजमेंट कंसल्टिंग में स्टार्ट करना, अभी मैनेजमेंट कंसल्टिंग की हमने बात नहीं करी है, उसकी कहानी भी लगभग सिमिलर है. whatever we have discussed for IB, almost similar. मैनेजमेंट कंसल्टिंग रोल अलग है, प्रोफाइल अलग है, बट जो अपॉर्चुनिटीज है उसका ऑलमोस्ट सिमिलर स्टेटस है. सो इसमें अगर आपको एंट्री लेनी है, राइट, सो प्लीज प्लीज आज से ही लिंक्डइन से रेलेवेंट कॉन्टैक्ट्स को कनेक्ट करना स्टार्ट कर दो. ठीक है. हाउ कैन यू स्टार्ट कनेक्टिंग टू राइट कॉन्टैक्ट्स, राइट? फॉर एग्जाम्पल, you are connected to me, right? Like, see that who all are in my network who are working for investment bank or valuations or due diligence. Then tell me this is one such person who is there in your contact. Can you please connect me with him? I want to speak with him. Can you help me out with that? I'm sure that out of 5-10 contacts, 1 or 2 will do that for you. And the moment you will do 1 or 2 interaction with them, they will again further connect you with people. So this is the only route. आज तक जितने लोगों को हमारे क्लास में भी हमने देखा है, जो लोग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में गए, they got only through this kind of route. Is it clear to everyone? Yes. So आज से ही आप लोग लिंक्डइन पे सुपर एक्टिव हो जाओ, और जितने भी आपके इस तरह के रेलेवेंट कॉन्टैक्ट्स हैं who are working for due diligence, valuations, investment bank, foreign banks, okay, try to connect with them. And then obviously you need to little bit do a search also. Again, LinkedIn पे आप जाओगे, and if you will type investment banking, okay, you will find all the people who are working in investment banking department. So that is another way. If you search about equity research, you will find lot of contacts which are working for equity research department. So that is an easier way. Okay. So as far as IB is concerned, yes, packages तो इसके phenomenal है. Packages multiply होते हैं. यहाँ पे increment ऐसा नहीं होता है 5%, 10%. यहाँ पे आप देखते हो तो increment यहाँ पे multiply होते हैं, right? Today you start with let's say 20 lakhs. Next year it could be 30 lakhs. Next year it could be 42 lakhs. Next year it could be 70 lakhs. इस तरह से इसमें ग्रोथ होती है. ठीक है. तो पैसा बहुत है, प्रेशर भी उतना ही है, उससे ज्यादा है प्रेशर. ठीक है. आपको लिटरली 15-16 आवर्स अ डे काम करना होता है इनिशियली जब आप फ्रेशर हो. सो यू हैव टू बी रेडी विद 15-16 आवर्स. आपको पूरा काम ही करना है. मतलब फर्स्ट 2 years need to do whatever. I mean, you need to really stretch yourself a lot. So work-life balance will be zero here. Okay. Okay. So again, like any question here. So otherwise, हम लोग आगे बढ़ते हैं. Okay. Great. Corporates, right? Second part आ जाते हैं हम लोग corporates पे. This was a different investment banking was a different area. Now talking about corporates. Corporates is
like Reliance Industries, like Infosys, like Wipro. Okay. Now you will find a lot of such companies are participating in campus. ये वो एरिया है जहां पर they want chartered accountants, right? IB में मैंने क्या बोला आपको कि industry generally do not recognize chartered accountants, and in case of corporates, normally they hire chartered accountants, right? We are so much recognized here. When I joined Idea Cellular, right, I remember there were almost 50 to 60 chartered accountants in our department in the corporate office. So that kind of recognition is there for chartered accountants in corporates, because here we are talking about financial reporting, accounting, taxation, and audit. So all the compliances, if you'll see, mostly people are chartered accountants for any company you name it. Okay, so this is one part. Now, what is the numbers? What is your understanding about the numbers which are written on the top? जो numbers लिखे हैं ऊपर, इससे आपकी क्या understanding है? I just read out the numbers if it is not clear. So over financial reporting, it is 70 is written. Then on treasury, 3 is written. FP&A 15 is written. Tax 10. Fundraising 2. Internal audit 2. Number of companies. और बताइए. What are these numbers about? Maximum hiring to minimum hiring. Okay. Okay. Anything else? Any other answer? All right. So basically, these numbers are the percentage of total employees working in finance department. Assume that there are 100 employees who are working for finance department. So you will find 70% of them are working for financial reporting. 15% are working for FP&A. 3 are working for treasury. 10 are working for taxation, fundraising, and internal audit. 2 and 1. Okay. Again, like this is a broader structure. हर कंपनी के साथ ये वेरी करता है. लेकिन ये एक बोल सकते हो आप, this is normally it is like that. 5 to 10% here and there, but normally it is like that. So what is the message behind this particular slide? The message for this slide is that the biggest department in the finance department is the reporting department. For a typical corporate, let's say if we talk about Wipro Industries. So in Wipro Industries, if there are 6 departments like this in finance, so you'll find the biggest department would be reporting department, because here you have to do accounts receivable, accounts payable, then you have to make the payments, then you have to do consolidation, then there are capitalization. The planning team is always small because there is not too much of routine work involved. It only has analysis work. So the team is slightly small. Then there is a taxation team, which is again small. Fundraising team, you will find only 2 or 3 people, and that too, they are sitting in corporates. So when you ask questions, ki, treasuries I want to start my career in treasury department, but you have to understand that there are only 3% people in corporates who are working in treasury department. So when the openings are so low, then definitely you need to be very clear that whether I should go for it or not. I mean, whether I should prepare for it or not, because if the companies are not coming at all for treasury's role, then what is the need? What is the point? So, are you clear about where will be the bulk openings coming from? Where are the bulk openings coming from? From financial reporting division. Is everyone clear about that? So you may be having this question that every year Vedanta is coming in campus. Every year Reliance is coming in campus. Every year L&T is coming in campus. Every year BPCL, HPCL, IOC.
for what they are hiring us. वो हमको हायर किस चीज के लिए कर रहे हैं? So they are hiring you for financial reporting. Is it clear to everyone? Now, second part. That's why India is wow, Harsh, fantastic. आपने मेरा काम आसान कर दिया. That's why India's related question are most preferred, right? बहुत ही obvious सी बात है. But thank you that you got it right. That's why Indians are so important because of these reasons. Mostly companies are coming in the corporate category and they are hiring for financial reporting division, and that's why the India's question are so important. Yes, great job. So this part is clear. Apart from that, FP&A, right? बहुत सारे students FP&A में अपना career start करना चाहते हैं, ठीक है? Why you want to start your career with FP&A? So उसका आंसर भी मैं दे देता हूँ आपको, राइट? आप FP&A में अपना करियर स्टार्ट किस लिए करना चाहते हो? उसका आंसर ये है कि आप एक्चुअली आपका करियर अकाउंट्स में स्टार्ट नहीं करना चाहते हो, ठीक है? सो यू थॉट कि ओके लेट्स हैव समथिंग एल्स. ओके, अकाउंट्स रूटीन हो जाएगा, देन टैक्स में इंटरेस्ट नहीं है सपोज, तो फिर व्हाट एल्स बचता क्या है? FP&A. या सो FP&A में करियर स्टार्ट करना चाहते हैं. सो इस तरह से अप्रोच है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, राइट? आपको कैसे अप्रोच करना है? यू शुड थिंक एंड अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली FP&A इज, और फिर ऐसे करके आपको स्टार्ट करना चाहिए. ऑल्दो FP&A हैज अ वेरी गुड करियर. मेरा जो करियर ग्राफ है वो FP&A से ही स्टार्ट हुआ था. आई वाज फॉर्चुनेट दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट माय करियर विद FP&A डिपार्टमेंट, एंड डेफिनेटली लाइक देयर इज अ real demand of it in the corporates. You also learn a lot about various things, and also you I mean आगे की बात है, like if you आप जो corporate में आप आगे बढ़ते हो, right? Suppose you are planning to become CFO, तो FP&A is something which where you have to take experience, ठीक है? So अभी companies जो campus के अंदर आती हैं, are they hiring, are coming for FP&A? Very few companies, ठीक है? रीजन क्लियर है आपको, डिपार्टमेंट स्मॉल होता है इसलिए नंबर ऑफ ओपनिंग्स भी कम होती है, ठीक है? प्लस यहाँ पे थोड़ी कंपटीशन आपको MBS से भी मिलती है. लेकिन ये जो डिवीजन है बेसिकली दिस वन, अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, राइट? दिस डिपार्टमेंट इन यू विल नॉट फाइंड एनी कंपटीशन फ्रॉम एनीवन एल्स. यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है वो क्लियर मोनोपोली. ओके, शुड वी मूव अहेड? Is anybody has any question on corporates? You can unmute yourself and then ask also अगर आपको टाइप करने में दिक्कत आ रही है. चलिए मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, तो थोड़ा सा और आपको क्लियर होगा, ठीक है? इसमें आपको अच्छे से आंसर करना है. ओके, दिस इज नॉट अ टेक्निकल क्वेश्चन बट अ करियर रिलेटेड क्वेश्चन. Suppose you will see that you are getting an opportunity in a payables department. पेबल्स डिपार्टमेंट का मतलब है आपको एक्सपेंसेस जो भी हो रहे हैं कंपनीज के उसका आपको पेमेंट करना है, दैट इज पेबल्स डिपार्टमेंट. सो आपको वो डिपार्टमेंट मिलता है, ओके, और उसमें आपको बोला जाता है कि लाइक यू हैव टू मेक द पेमेंट फॉर एम्प्लॉयज रीएम्बर्समेंट बिल्स, राइट? एम्प्लॉयज जो भी एम्प्लॉयज ट्रैवल करते हैं, होटल्स में जाते हैं, खाना खाते हैं, वॉट एवर, तो एम्प्लॉयज के बहुत सारे रीएम्बर्समेंट्स होते हैं. सो यू हैव टू do a reimbursement of those bills. This is your profile. Now my question to you is, will you join that company or not? Will you join that profile or not? You can say, write yes or no in the chat box. No.
डोंट वरी, मतलब ऐसा मत सोचो कि हम कुछ लिख देंगे यहाँ पे तो वो कोई कंपनी चेक कर लेगी कि यस ये इसके लिए इंटरेस्टेड है या नहीं है, राइट। ये आपके और मेरे बीच की बात है, राइट, ये कहीं कहीं पे बात जाएगी नहीं। ओके, नो नो, डायरेक्ट डायरेक्ट मैसेज भेज रहे हो आप लोग, है ना, सबको नहीं पता लगना चाहिए। Send to all, yes, everybody should see like what is there. Okay, so I got three response. One is no, second one is no, and third one is a very logical point. उन्होंने लिखा है what is the pay, right? I'll decide after that. Okay, great job. Okay, so basically, suppose if you are saying yes or no, whatever, if you're saying no, basically, right? If it is, you may think that I have done chartered accountancy and now I am just making the payment of the bills. Okay, it's so simple and so routine. But again, an additional information comes to you that this profile, the company is basically a very large public sector undertaking. Very large public sector undertaking. PSU, मतलब जो आप लोग कई लोगों को लगता है ना कि लाइक गवर्नमेंट जॉब अगर मिल जाए तो बस उसके बाद लाइफ सेट है, एकदम कुछ करना ही नहीं है फिर तो। So it is from one of the largest PSU of India, right? तब क्या करना है आपको? तब भी आपका आंसर यही रहेगा, नो और यस। Okay, then maybe your answer may get changed. Okay. Now my answer to those who straight away say no, I'll not join such kind of organization. If they will tell you that the package for these roles are 18 lakhs, right? Or maybe 21 lakhs. Okay. Then what will be your answer? अब कितने लोग बताओ मुझे, जो बोलेंगे कि नो आई डोंट वांट टू जॉइन दैट? ओके, नोबडी इज सेइंग। सो अब सवाल ही बदल गया एकदम, राइट। अभी प्रोफाइल थी इंपॉर्टेंट, प्रोफाइल ही चेंज होकर अब फोकस किस पर आ गया? पैकेज पर आ गया। 21 lakhs का पैकेज है। तो अब आपको जो इसलिए, राइट, इसीलिए आपको अपनी अपने प्रेफरेंसेस बहुत क्लियर समझने हैं, whether you are inclined towards profile, whether you are inclined towards package. If it is package, you will get such kind of package in these kind of organization. So companies like IOC, companies like HPCL, companies like BPCL, they pay you around 15 to 20 lakhs. ठीक है, उसमें से बहुत सारा कंपोनेंट इमीडिएट नहीं भी मिलता है, तब भी लाइक इट्स अ heavy I mean heavy CTC. So but again like if the profile is not interesting, will you go for it or not? तो ये क्वेश्चन अब आपको फ्यूचर में आने वाले हैं। कुछ कॉल्स आप खुद को लेने हैं, अपनी खुद की एक चॉइस होती है। जैसे कि लाइक सम स्टूडेंट्स से दैट आई कैन नॉट वर्क वेरी लॉन्ग, राइट। कुछ लोग बोलते हैं हमने ज्यादा काम नहीं किया था, करके ज्यादा काम नहीं करना है आपने, राइट। सो वो वहां पे फिर आप एक चीज एक्सपेक्ट करोगे, लाइक फिर सीटीसी भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करो। बट आप चाह रहे हो कि सिटी हम लोग अच्छा मतलब सीटीसी बहुत चाहिए, ठीक है। सो फिर देन बी रेडी फॉर लॉन्ग वर्किंग आवर्स एज वेल। Okay, Girdhar is sharing his experience, industrial experience where I worked under controllership department. End of the day, it's financial reporting which gives you a holistic view of all department. Okay, so he has worked for finance controllership department, which is a reporting department, and you are very happy with that. Okay, great, good to know that. No, it's see like you get learnings, right? But again like there are some misconceptions as well, तो आपको उन misconceptions को eliminate करना है। ओके, शुरुआत आपकी अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की बात करोगे, ऐसे ही किसी काम से होगी जहाँ पे आपको बहुत ही बेसिक वर्क दिया जाएगा, और फिर आप
धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाओगे। हो सकता है आज आपको पेबल्स डिपार्टमेंट में एक पर्टिकुलर पेमेंट के लिए बोला गया है, फिर कुछ और बोलेंगे, फिर कुछ और बोलेंगे, ऐसे करके धीरे धीरे आप ग्रो करते हो इन लार्जर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। Okay, so this was about corporates. Third is about firms. ठीक है। Firms, again, ये बहुत ही लंबा डिस्कशन है about firms, whether you want to join a big four or not. Big four, big eight firms. Big four में all this PwC, Deloitte, KPMG, EY, and big eight में Grant Thornton, Baker Tilly, BDO, all these kind of firms. So you should start your career with these firms or not. इसका एक simple answer ये है कि अगर आपको लगता है आपके अटेम्प्ट्स ज्यादा है, ज्यादा का मतलब क्या है, इफ योर अटेम्प्ट्स आर मे बी मोर देन 4, 4 से ज्यादा अटेम्प्ट अगर आपके, ठीक है, सो उस केस में कहीं ना कहीं शॉर्ट लिस्टिंग में इश्यूज आते हैं। और इश्यूज आते हैं इन द सेंस ऑप्शंस थोड़े से आपके रेस्ट्रिक्ट होते हैं, लिमिट होते हैं, लेकिन उसको मतलब कौन से सेंटर में लिमिट होते हैं, कौन से सेंटर पे हाई चांसेस रहते हैं, ये हम लोग इंडिविजुअली बात करेंगे जब आपका शॉर्ट लिस्टिंग का टाइम आएगा। बट एट दिस मोमेंट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि जिनके स्लाइटली हायर अटेम्प्ट्स, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट्स, ओके, डेफिनेटली कीप योरसेल्फ ओपन फॉर बिग 4. प्लीज डोंट पुट अ फिल्टर दैट नो आई डोंट वांट टू गो फॉर बिग 4. बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं देखता हूँ जो बोलते हैं कि नहीं अभी ऑडिट बहुत हो गया, अब ऑडिट में नहीं जाना, बट प्लीज डोंट कीप दैट फिल्टर। ठीक है। अब जिनके लेस देन 4 अटेम्प्ट्स हैं, they don't want they should go for a big 4 or not. Again, one is that big 4 की भी अपने आप में growth trajectory काफी अच्छी है, like you start with maybe as a senior executive, then senior executive manager, after manager senior manager, and then maybe associate director partner. इस तरह का जो growth trajectory है। पैकेजेस वाइज भी बात करें, पार्टनर की सैलरी अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड दैट इट्स वेरी गुड, ग्रेट। तो package wise, Big Four is almost matching the industry standards, although the work-life balance is not very good. But learning is good, brand is good, package is good, growth opportunities are good. So Big Four in a way is a good opportunity, except कि थोड़ा work-life balance जो है वो उतना खास नहीं होता है। अब आपको उसमें ज्वाइन करना है नहीं करना है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसमें नॉर्मली जैसा मैंने आपको बताया कि आपको लग रहा है कि लाइक मेरा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स थोड़ा ज्यादा हो गए। मेरा ऐसा केस है जिसमें मेरी आर्टिकल्स पे एक्सपीरियंस भी कुछ खास नहीं था, जिसके कारण मुझे हो सकता है इंटरव्यूज में प्रॉब्लम आए। तो ऐसे केस में आप सोच सकते हो ज्वाइन करने का। जिनके लेस देन 3 अटेम्प्ट्स हैं उनके लिए मेरा पर्सनल सजेशन है दैट गो फॉर कॉर्पोरेट्स, क्योंकि इवेंचुअली आप बिग 4 भी ज्वाइन करोगे तो फिर कॉर्पोरेट्स में आने की कोशिश करोगे, तो स्ट्रेट अवे आप कॉर्पोरेट से ही स्टार्ट करो। ठीक है। अगेन इट्स इंडिविजुअल डिस्कशन दैट इज रिक्वायर्ड। तो इसलिए लाइक मैंने आप पहले भी बताया था कि हम लोग प्री रिजल्ट्स वी कीप द बैच, ओवरऑल भी हम लोग की बैच साइज हम लोग छोटी ही रखते हैं। प्री रिजल्ट्स इट इज 30 and post results it will be 60. Okay, so that individually I will able to speak with everyone. Okay, so there are generally traditional works openings in these firms except transfer pricing valuation. हाँ मतलब वैल्यूएशन अगर आप ट्रांसफर प्राइसिंग और वैल्यूएशन छोड़ दो, अगर ट्रांसफर प्राइसिंग इनफैक्ट इज आल्सो ट्रेडिशनल एरिया ओनली, ठीक है, उसमें भी कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं है। वैल्यूएशन छोड़ दो अगर बिग 4 में, तो फिर अकाउंट ऑडिट टैक्सेशन ही सिंपल जो ट्रेडिशनल वर्क होता है। बिग 4 में अगर आपको वैल्यूएशन मिलता है तो यस डेफिनेटली वो एक अलग ही बात है। वैल्यूएशन या ड्यू डिलिजेंस मिलता है, वो आपका ग्रोथ ट्रैजेक्टरी कुछ अलग लेवल पर लेके चला जाता है। ठीक है। सो दिस इज अबाउट द फर्म्स। ओके, शॉर्ट में डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें भी बहुत लंबा डिस्कशन है। इसमें लंबा डिस्कशन क्या है, क्योंकि फर्म्स में केवल ऑडिट नहीं है, स्टेट ऑडिट, देयर आर स्टेट ऑडिट, देन इंटरनल ऑडिट, देन सर्विस डिलीवरी सेंटर्स जो ऑफशोर वर्क होता है, then transfer pricing, then you find indirect taxation, direct taxation, then governance risk and compliances. Okay, then
देर आर सम टेक बेस्ड वर्क, आजकल टेक के लिए भी काफी सीएस को हायर किया जा रहा है। ऑल्दो हम लोग फाइनेंस के लोग हैं, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड रोल्स में भी सीएस की डिमांड बढ़ रही है। वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उनको स्मार्ट लोग चाहिए, ओके, जिनको फाइनेंस का नॉलेज है। तो यस, दैट्स व्हाई दे आर हायरिंग चार्टर्ड्स। तो इस तरह से ये भी एक बहुत सारी प्रोफाइल्स है इसके अंदर, ओके। इसमें अगर किसी को कोई इमीडिएट डाउट हो तो वो बताइए। Any specific doubt in this one? वैसे किसी ने लिखा नहीं था कि लाइक आई वांट टू ज्वाइन फॉर्म्स, ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है, और वो पॉइंट क्या है, आपको चॉइस अपनी चॉइस लिमिट नहीं करनी है। आप लिमिट करोगे प्रॉब्लम आएगी। मैं अभी आपको लाइव एग्जांपल दे देता हूँ May 22 बैच का। आप आपके सीनियर्स या आपके फ्रेंड्स जिन्होंने भी May 22 में सीए क्लियर किया है, उनसे बात करना है कि लाइक जॉब मार्केट कैसा रहा था, कैंपस कैसा रहा, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज थी। वो आपको पूरी रियलिटी बता देंगे, राइट। इट वाज वन ऑफ द टफेस्ट अटेम्प्ट। अपॉर्चुनिटीज की बहुत ही ज्यादा कमी थी यहाँ पे, देयर आर वेरी फ्यू अपॉर्चुनिटीज। आई हैव नॉट सीन अ बैड अटेम्प्ट देन द लास्ट वन। देयर वर रियली very difficult phase that your friends have seen. You should speak with them. Make sure that you speak with them. तब आपको एक रियलिटी पता चलेगी, ठीक। उस रियलिटी से क्या फायदा होगा आपको? The real benefit is that you will keep all your options open. अभी कैसा है, like I want to go into this and this is my criteria, but after speaking with them you will open up yourself for almost all opportunities. Then you will not be specific to only one कि मुझे तो इसी में जाना है। लोग बोलते हैं कि आपके प्लान एक ही प्लान होना चाहिए, नहीं। मैं तो हर बार यही सजेस्ट करता हूँ कि लाइफ में भी और कैंपस में भी आपके हमेशा दो प्लान होने चाहिए। अगर आपका प्लान ए बिगड़ गया तो प्लान बी, यू शुड ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान। So plan A, if it won't work, suppose if you are looking for investment bank and if you don't get anything in investment banking, what is your alternate plan? So people don't really think about it in the very first place. They think that no, we'll get something. But please take understanding from the your seniors or maybe your friends that what kind of campus was there last time. Okay, so this was about firms. There are various audit profiles here: state audit, internal audit, ERP audit, GRC, forensic audit, SDC, GDC. This is again very important discussion to do, but again like बहुत डीप में चले जाएंगे हम लोग आज के डिस्कशन के हिसाब से। इसको हम लोग कभी और कवर करेंगे। लेकिन आपको बस ये समझना है कि विद इन बिग फोर इट्स नॉट ओनली स्टेट ऑडिट, देयर आर मल्टीपल काइंड ऑफ ऑडिट्स, and then there is taxation, and then there is indirect taxation. So within big four there are various options available. After that comes banks, right? Banks is one option where one special thing about getting into normal regular banking is that you will find these opportunities in your hometown also, good opportunities. वैसे तो corporates में भी मिल जाती है। Like right now I am sitting here in Indore. Indore is a tier 2 town. So tier 2 में you will find packages are comparatively not very high for a fresher chartered accountant. But if you will go to any bank as a credit manager, you will find that banks are giving a decent amount, 8 lakhs, 9 lakhs. Last time ICAI has given 11 lakhs also. Although usme 1.5 lakh CTC was for loan component, but effectively you can say 9.5 lakhs, which is great. I think 9.5 lakhs for a tier 2 city is very good number. So credit management is one such profile which is available all across all kind of towns, tier 1, tier 2, tier 3, and it has growth also, brand also, package also, right? So कई लोग पूछते हैं ये सवाल कि लाइक हमें हमारे होम टाउन से स्टार्ट करना है,
वी डोंट वांट टू गो आउट। क्या करें ऐसे केस में? सो दिस इज द आंसर फॉर यू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So please remember that credit management is one such option. Now these days the corporates are also started giving good start, but still like it is not. अगर tier 2 टाउन्स की बात करें तो corporates अभी भी उतना पे नहीं कर पा रहे हैं। एक बार आप जरा लिख के बताएं आप लोग कौन कौन से टाउन्स हैं जरा। I'll get an idea about. Okay. सर एक डाउट था। हाँ बोलिए। सर अगर समझो कि हम अगर बैंक में चले जाते हैं कि होम टाउन नहीं छोड़ना है, ऐसी कंडीशन है अपनी, फिर उसके बाद अगर दूसरा क्या ऑप्शन है, साइड ऑप्शन? क्योंकि वो तो इतना डिसेंट पैकेज नहीं है। ठीक है। नहीं, बैंक इज अ गुड ऑप्शन, डिसेंट पैकेज उसमें। एक्चुअली मेरा तो आगे पीछे गैप हो रहा है। मैंने आपको रिज्यूम भी भेजा था शायद इसके लिए, फिर मुझे थोड़ा वो दिक्कत है। देखो बैंक नॉर्मली अगर आपके गैप्स भी हैं तो भी बैंक्स नॉर्मली हायर करती है। मैंने आपको बताया है कि लाइक मैंने इस स्टूडेंट्स को भी डील किया है जिन्होंने 13 अटेम्प्ट्स में क्लियर किया है, 16 अटेम्प्ट्स में क्लियर किया है। ठीक है, अगर बहुत बड़ा गैप भी है अगर आपका, तब भी बैंक्स कंसिडर करती हैं उसमें। फिर डेफिनेटली लाइक आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, हो सकता है इन बैंक्स में स्टार्ट ना मिले आपको, बट यू विल गेट समथिंग इन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बंधन बैंक। पैकेज कम हो जाएगा बट एटलीस्ट स्टार्ट हो जाएगा आपका करियर। ओके। और सर इसमें आगे कुछ स्कोप है? ये तो चलो स्टार्टिंग की पोजीशन है है ना क्रेडिट इसमें? मैनेजर। डेफिनेटली क्रेडिट मैनेजर हैज अ पोटेंशियल, राइट? इसमें ग्रोथ अच्छी है। अच्छा, क्योंकि सर एक बार तो चलो हम स्टार्ट करने के लिए कहीं से भी कर देंगे, फिर आगे की पोजीशन का कैसे क्या ग्रोथ है वो कुछ आइडिया ही नहीं होता है हमको। नहीं, वही मैं बता रहा हूँ आपको कि देयर आर गुड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इसमें। ओके। ऑल्दो आपको बैंक में ही ग्रो करना है, लेकिन देयर आर गुड अपॉर्चुनिटीज इन दिस वन। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि लाइक इफ यू आर स्टार्टिंग एज अ क्रेडिट मैनेजर, आई थिंक आई हैव ऑलमोस्ट close to 70 or 80 of my students who are working as a credit manager. ओके। HDFC, ICICI, Axis, AU Small, Bandhan Bank, IDFC, or you may say like NBFCs, so IIFL, Muthoot Finance, lot of NBFCs as well, right? So सर we have seen good growth in this one. क्योंकि यहाँ पे ऐसा ट्रेंड चल रहा है, जैसे आपने बताया ना आप इंदौर से हो, तो बड़ौदा गुजरात में ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि सब 2 इयर्स तक बैंक में काम करते हैं, फिर कॉन्टेक्ट्स वगैरह खुद के मिल जाते, तो फिर सभी प्रैक्टिस में ही आ रहे हैं वापस। तो फिर मुझे ये थोड़ा था, पूछूं मैं आपसे। देखो उनके अगर कॉन्टेक्ट्स बन जाते हैं तो उनको ग्रोथ दिखती है ना उसमें। Once they build the contacts, then they start their practice in finance domain. तो अच्छी बात है ना, आपके पास अगर एक लाइन और ओपन हो जाती है। अच्छा। नहीं, जनरली ऐसा कहते हैं ना कि भाई आपको जो करना है पहले से ही स्टार्ट कर दो, या तो प्रैक्टिस या जॉब। नहीं पर नहीं नहीं, इन्हीं। वो पॉसिबल अच्छा। नहीं है। फिर तो आप मेरे को बोलोगे कि आप ट्रेनिंग मत लो, क्योंकि आपने तो शुरू से ट्रेनिंग ही नहीं ली है, आप तो पहले जॉब में थे, नहीं राइट? सर, ऐसे यानी जनरली अभी क्या है कि आर्टिकलशिप में हमको इतना नॉलेज नहीं था, पर अभी ये चांस है कि हम पहले से क्लियर करके चले सब, इसलिए सब सोच रहे हैं। करेक्ट करेक्ट वो लेकिन वो थियोरेटिकल सिनेरियो है। क्वेश्चन अच्छा है आपका, दैट शुरू से इतना प्लान करके चलें कि आगे कोई दिक्कत ना हो, तो वो पॉसिबल नहीं है, राइट? अभी आप एक ब्रॉड क्लैरिटी ले सकते हो और उसके बाद ही आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, तो 100% क्लैरिटी लेने की कोशिश भी मत करो, 100% लेने की, क्योंकि वो इमेजिनरी सिचुएशन है कि 100% क्लियर हो गया आपको कि करना क्या है। ठीक है ना? वो तो आपने देखा होगा कि वो क्लैरिटी के लिए तो लोग पहाड़ों पे चले जाते हैं, राइट? हिमालय पे चले जाते हैं, टेक दैट काइंड ऑफ सेल्फ क्लैरिटी। तो ओके। उतनी क्लैरिटी नहीं आएगी, राइट? ये मैं आपको बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस का क्रक्स बता रहा हूँ।
Okay. So you will get a clarity for let's say next 6 months, 1 year. Then again take a clarity for 6 months, 1 year. और एक बहुत धीरे धीरे आप इवेंचुअली आपको क्लियर हो जाएगा कि ये एरिया प्रॉमिसिंग एरिया है, इसमें मेरी स्ट्रेंथ ज्यादा है, फिर आप धीरे धीरे करके उस एरिया में चले जाओ। ठीक है, तो खैर वो एक अलग डिस्कशन है अबाउट हाउ टू डिसाइड विच एरिया आई वांट टू गो। बट banks, is it clear that there are good opportunities? Then there is a profile called as relationship manager. Relationship manager is a sales profile. Okay. Normally people who are from finance domain, they have this question that should we go into sales or not. Some are very clear. अभी मैं आपसे पूछूंगा, आप सब बोलोगे कि नहीं सेल्स में तो नहीं जाना है, हमने तो पढ़ाई तो कुछ अलग ही करी है, पर सेल्स के लिए थोड़ी करी है। तो लेकिन एक जस्ट एक पॉइंट यहाँ पर ऐड करना है मुझे। यू हैव स्टडीड सीए फॉर अ करियर ग्रोथ, डोंट मेक इट अ लिमिटिंग फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसको लिमिट, अपने आप को लिमिट करने के लिए आपने सीए नहीं करा है, आपने अपने आप को ग्रो करने के लिए सीए किया। ठीक है, सो रिलेशनशिप मैनेजर इज अ डिफरेंट रोल, different profile, but it is not related to your subjects, so you should see it independently. Like, is it having growth, is it providing great opportunities or not, right? सिंपल सी बात ये है कि जो सीईओज बनते हैं बैंक्स के, बिजनेस हेड्स जो बनते हैं, वो बनते हैं रिलेशनशिप मैनेजमेंट से स्टार्ट करके। जितने भी आप देखोगे बिजनेस लीडर्स हैं, राइट, दे वर इनटू सेल्स। तो ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, so banks clear है आप लोगों को। Branch manager, as such, there are not many opportunities also, and I won't say that it's a very good thing to start also. So focus mostly on credit and relationship management. Then there are roles into IT companies. This is the last part, which is IT companies. ठीक है, IT companies like अब जैसे मैंने आपको बोला कि काफी सारे टेक्नोलॉजी रिलेटेड रोल्स के लिए भी सीए को हायर किया जा रहा है। सो टेक्नोलॉजी रिलेटेड रोल्स मतलब क्या हो गए? सपोज बहुत बेसिक एग्जांपल लेते हैं उसका, आपको टैली इंप्लीमेंट करना है, तो आपको टैली इंप्लीमेंट करना है आपके ऑफिस में। ठीक है, तो वो जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए लोग आते हैं, उन लोगों को टैली का भी नॉलेज होना चाहिए और फाइनेंस का भी नॉलेज होना चाहिए। करेक्ट, मतलब टैली कैसे वर्क करता है, यानी कि सिस्टम का नॉलेज, और फाइनेंस कैसे काम होता है, मतलब डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, दैट। सो इस रोल के लिए बहुत बहुत हायरिंग होती है और हर बार होती है, जिसमें आपको सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन के लिए हायर किया जाता है। आपने सुना होगा रेव गुरु करके एक कंपनी है, बहुत सारे मतलब आपके सीनियर्स, आपके फ्रेंड्स, आप देखोगे तो आपको लगेगा कि many of them are working for रेव गुरु, right? So what they do basically, so they are basically into implementation of systems. रेवेन्यू, खास तौर पे रेवेन्यू रिसीवेबल्स वाला जो मॉड्यूल है उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, मतलब अगेन सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। हमने तो टैली का एग्जांपल लिया, नॉर्मली कंपनीज में ओरेकल और सैप, ये दो चलते हैं हर बड़ी कंपनी में, सैप एंड ओरेकल। क्लियर है आप लोगों को? तो इसके लिए लोग हायर करते हैं। नाउ अगेन क्वेश्चन इज वेदर वी शुड गो फॉर इट और नॉट। अगेन ठीक है, एज द अपॉर्चुनिटीज विल कम, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, डिसीजन जो लेना है। लेकिन अभी मैंने आपको जो बताया है वही बताया कि दिस इज द इंडस्ट्री सिनेरियो। ठीक है, अब क्विकली मैं आपको थोड़ा सा इसको समराइज कर देता हूँ। easily available is industry, firms and banks, and difficult is investment banking, consulting and equity research. Difficult to get मतलब आपको इसकी अपॉर्चुनिटी कैंपस में नहीं मिलेगी। ये एक एग्जांपल है, ठीक है, बैंगलोर सेंटर का। बैंगलोर सेंटर में जितनी कंपनीज आई थी, ठीक है, कौन से अटेम्प्ट में आई थी ये तो मुझे देखना पड़ेगा, बट एक पर्टिकुलर अटेम्प्ट में these many companies have come in Bangalore center.
और ये आपको आई थिंक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, यस? नहीं किया है तो मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप की, उसको ज्वाइन कर लो। उसमें मैंने लास्ट 3 अटेम्प्ट्स में जो कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, उसकी लिस्ट भेजी हुई है, आप देख लेना। और भी उसमें रेगुलर कुछ ना कुछ, अभी रिज्यूम का फॉर्मेट भेजा था हमने, ठीक है, रिज्यूम का फॉर्मेट बना लो। सो so these are the companies who participate in Bangalore Center. Now, if you will see that what are the type of companies, so you will find that it is bank, firm, bank, industry, firm, IT company, IB के लिए एक कंपनी आई थी, इक्विटी नॉलेज पार्टनर्स, ठीक है। फिर इंडस्ट्री, फर्म एंड लाइक दैट। इसको अगर आप पूरा समराइज करोगे, राइट, टोटल 38 कंपनीज आई थी बैंगलोर सेंटर। उसमें से 13 वर फर्म्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 13 फर्म्स थी, सीए फर्म्स, इंक्लूडिंग बिग फोर ऑल्सो। 18 वर इंडस्ट्री लाइक जो हमने एग्जांपल लिया था कॉर्पोरेट का एक, फॉर 5 वर्टिकल्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, FP&A, उसके लिए 18 वर फॉर दैट। 2 बैंक, 2 फंड अकाउंटिंग, 1 IB एंड 1 IT, 2 IT कंपनी। सो दिस इज द रियलिटी। इस रियलिटी को जल्दी से जल्दी आप एक्सेप्ट कर लो। ये रियलिटी जिन लोगों ने जो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो अपनी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंगली कर लेते हैं। जो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, राइट, वो कुछ अलग ही कोशिश में लगे रहते हैं। अलग कोशिश मतलब, जैसे सपोज अभी आप लोग इक्विटी रिसर्च, IB, मैनेजमेंट कंसल्टिंग, हो सकता है इसकी तैयारी कर रहे हो, उसमें नुकसान कुछ भी नहीं है। देखो, तैयारी करना इज ऑलवेज गुड टू गेन नॉलेज। आप मैनेजमेंट कंसल्टिंग की तैयारी करो, बहुत फायदा होगा आपको। IB की तैयारी करो, तैयारी करना इज ऑलवेज गुड, मैं उसमें रोक नहीं रहा हूँ आपको, लेकिन आपको ऑल्टरनेट प्लान्स को कैरी करना है साथ में। सपोज आपके बहुत ज्यादा अटेम्प्ट हो गए, आप इंडेस भूल चुके हो, ठीक है। अब ऐसे केस में क्या करना है? आपने पूरी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की तैयारी करी, बट क्वेश्चन किस चीज का आया? फाइनली क्वेश्चन आपको इंडेस का आया। शॉर्ट लिस्टिंग आपको कॉर्पोरेट्स की आ रही है ना, बिकॉज आप देख ही रहे हो 18 वर इंडस्ट्री आउट ऑफ 38, ऑलमोस्ट 50%। 50% केसेस में आप किसी ना किसी कंपनी को फेस करोगे, और 13 वर फर्म्स, मतलब 75% चांसेस ये है कि या तो आप फर्म्स को फेस करने वाले हो या किसी कॉर्पोरेट को फेस करने वाले हो। तो यू प्लीज प्रिपेयर योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू इट। आई मीन दिस इज आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, and it's very important to understand this particular part. Yes, okay, चलिए आगे चलते हैं। So ये बेसिकली थोड़ा एनालिसिस ये रिलेटेड टू कैंपस, किस टाइप की कंपनीज आती हैं और एक पैकेज, और इसका भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ किस टाइप की कंपनीज आती है, क्या पैकेज लेकर आती है, और किस टाइप से उनका वर्किंग रहता है, ठीक है। ऑल्दो दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। वैसे तो हम क्लास में इसके ऊपर वोटिंग करवाते हैं, राइट, हु गो फॉर विच वन, लेकिन अभी मैं आपको जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बता रहा हूँ। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज, अकाउंट्स रिसीवेबल, मुंबई लोकेशन, वर्किंग ऑलमोस्ट 10-12 आवर्स मान लो। PSU अकाउंट्स पेएबल, रिमोट लोकेशन 7 आवर्स। रिमोट लोकेशन मतलब नॉट नेसेसरी कि आपको आपके ही टाउन में मिल जाएगा या Tier 2 में मिल जाएगा। हो सकता है आपको किसी छोटे से गांव में जहाँ पे उनका प्लांट लगा हुआ है वहां पर भेज दें। तो इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। क्रेडिट मैनेजर, जैसा मैंने आपको बताया, होम टाउन मिल सकता है। बिग फोर स्टैट्यूटरी ऑडिट, राइट, वर्क लाइफ डिफिकल्ट है यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कम से कम 15 से 16 घंटे ले लो। लोकेशन नॉर्मली Tier 1, राइट, मुंबई, बैंगलोर सॉर्ट ऑफ। PwC, SDC मोस्टली वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है उसमें, ओके। जिन लोगों को वर्क फ्रॉम होम लेना है, राइट, इस तरह की कंपनीज ले लो, PwC, SDC। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टेड होती है,
लेकिन still like there are the big names in that one. Accenture, Bangalore, good profile. Vedanta, financial reporting, plant location. Vedanta में जितने भी आपके friends काम कर रहे हैं, you will find them mostly they will be working for remote location. ठीक है? Infosys, SAP analyst, Bangalore. Okay. और ये बेसिकली अगर आप देखते हो तो ये उनके पैकेजेस आ गए हैं. ठीक है? So broadly, right, you will be मैक्सिमम लाइक अभी जो आप में से जितने लोग हो, मेरा पर्सनली मानना है कि आप में से 75 to 80% लोग इनमें से ही किसी टाइप की कंपनी में काम करेंगे, क्योंकि ये हमने एक तरह की ऑलमोस्ट सभी कैप्चर कर लिया है. सो मे बी 1 or 2. वेदांता इज फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट, थ्रू आउट फर्स्ट अटेम्प्ट, मतलब इंटरमीडिएट ऑल्सो एंड फाइनल ऑल्सो. ऑल राइट, चलिए. सो ये डिस्कशन को मैं यहाँ पे कंक्लूड कर देता हूँ. ठीक है? किसी का और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए मुझे. सर जैसे आपने पीडब्ल्यूसी एसडीसी में बताया वर्क फ्रॉम होम, तो उसके लिए फिर ट्रेनिंग वगैरह देते हैं वो? हाँ, कैसे रहेगा? ट्रेनिंग मिलती है आपको शुरू के दिनों में. वो दे व्हाट इज द इंक्रीमेंट रेट इन बिग फोर. इंक्रीमेंट नॉर्मली बिग फोर भी ज्वाइन करो या कोई भी कंपनी ज्वाइन करो, आपका एनुअल इंक्रीमेंट होता है बिटवीन 8 to 10%. आप 8 से 10% ग्रो करोगे हर साल, एक्सेप्ट इफ यू स्विच. जब आप स्विच करते हो तो डेफिनेटली इट इज मच हायर देन दैट. For securing any job opportunity, you should have job opportunity also and skills also. ठीक है? मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि हाउ डू यू वैल्यू अ स्टार्टअप. ठीक है? तो ये होता है स्किल. डू यू थिंक दैट यू आर हैविंग राइट स्किल्स इफ यू वांट टू जॉइन अ इन्वेस्टमेंट बैंक? पर्सनली स्पीकिंग एट दिस मोमेंट नो, यू आर नॉट इक्विप्ड. ठीक है? क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जो आपको थोड़ा पढ़ाया जाता है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको पढ़ाया जाता है, बट उतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता है जितना रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है. ठीक है? सो इसमें आपको स्किल्स बढ़ाने हैं. इसमें स्किल्स में क्या क्या बढ़ा सकते हो? इसमें अपने स्किल्स में एक तो बिजनेस नॉलेज बढ़ाओ आपका, थोड़ा आप फाइनेंशियल मॉडल कैसे बनता है ये समझो, वैल्यूएशंस कैसे होते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डू यू वैल्यू, व्हाट इज वैल्यूएशन. ठीक है? जब आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की तैयारी करो तो वैल्यूएशन को फोकस बना के अपनी स्टडीज तैयारी करो. जहां तक जॉब अपॉर्चुनिटीज का सवाल है, मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप आईबी के लिए जाना चाहते हो या मैनेजमेंट कंसल्टिंग के लिए, कनेक्ट विद द पीपल, राइट, दैट इज द राइट वे. अगर आप कॉर्पोरेट में जाना चाहते हो, बिग फोर में जाना चाहते हो, बैंक्स में जाना चाहते हो, वहां पर खुद आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी. आपको कहीं जाना नहीं है. आपको आपके रिज्यूम अपलोड करने हैं अलग अलग वेबसाइट्स पे और इंस्टीट्यूट कैंपस पे, और आपके पास अपॉर्चुनिटीज खुद आएंगी. आपको कहीं भागना नहीं पड़ेगा. लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और मैनेजमेंट कंसल्टिंग, इसके लिए आपको खुद को एफर्ट लेने पड़ेंगे. आर यू क्लियर? ठीक है? सो दिस पार्ट इज क्लियर रिलेटेड टू अपॉर्चुनिटीज. ठीक है? दिस इज अगेन अ समरी ऑफ दैट. अटेम्प्ट्स को लेकर एक बार और मैं बोल देता हूँ कि अटेम्प्ट्स से शॉर्टलिस्टिंग के ऊपर इम्पैक्ट आता है. जिसके ज्यादा अटेम्प्ट होते हैं डेफिनेटली शॉर्टलिस्टिंग कम आती है. उन लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि फॉर्म्स के हिसाब से तो डेफिनेटली तैयारी करनी चाहिए. फॉर्म्स, बैंक्स, ये दो के हिसाब से अच्छे से तैयारी करो. ठीक है? इंडेक्स ठीक से पढ़ो, क्योंकि आप लोग 100% फेस करोगे इंडेक्स. जिन लोगों के कम अटेम्प्ट है, राइट, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, उन लोगों को भी ये चीज नहीं सोचनी है कि अभी हमने लेटेस्ट में सब पढ़ा है. ठीक है? आपको भी जो एक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए हैं कैंपस के अंदर, उन कैंपस के क्वेश्चंस की तैयारी करनी चाहिए. ऑल्दो मैं हर सेशन में लास्ट में कवर कर रहा हूँ वो क्वेश्चंस को, लेकिन यू ऑल्सो डोंट फील कि लाइक वी आर 100% प्रिपेयर्ड, क्योंकि आपने फाइनल के हिसाब से तैयार करा था.
अभी कैंपस में उनकी अप्रोच अलग है. Today also we will have some 3 questions, okay, on the campus quiz. ठीक है. So this is basically broad discussion. Although I understand कि ये discussion काफी अधूरा सा discussion था. इसमें हर एक में आप I can spend almost 4-5 hours हर vertical के ऊपर. Like अगर मैं को बैंक के ऊपर बोलना है I can speak for 4 to 5 hours non-stop. ऑडिट के ऊपर भी उतना ही है, राइट. उसमें करियर अपॉर्चुनिटीज, करियर ग्रोथ, बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं. लेकिन एक आई एम श्योर कि आपको एक ओवरऑल क्लैरिटी मिली है कि 5 तरह के वर्टिकल्स आप देखोगे: इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कॉर्पोरेट फर्म्स, बैंक्स एंड आईटी कंपनीज. उसमें से कौन सी डिफिकल्ट है मिलना, कौन सी इजी है मिलना. जो डिफिकल्ट है उनके लिए आप अभी से अपने लिंक्डइन के कॉन्टैक्ट्स के थ्रू और जो भी आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स है उनके थ्रू अपॉर्चुनिटी सर्च करना स्टार्ट कर दो, उनके लिए स्किल्स बिल्ड करना स्टार्ट कर दो. और जो इजी अपॉर्चुनिटीज हैं लाइक कॉर्पोरेट, बैंक्स एंड फर्म्स, उनके लिए अपने आप को उनके क्वेश्चंस के लिए अपने आप को तैयार करो. यहाँ पे आपको इजी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी. आप जैसे ही रिज्यूम अपलोड करोगे आपको कॉल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है. दूसरा हमने डिस्कशन ये करा था कि आईबी में अगर जाना है तो फिर थोड़ी टीयर 2 टाइप की फॉर्म्स जो है उनको टारगेट करना है आपको. वहां पे पैकेज आप कॉम्प्रोमाइज करोगे लेकिन आपको जो प्रोफाइल चाहिए वो आपको मिल सकती है. ठीक है. सो दिस इज फ्रॉम माय साइड. एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव रिलेटेड टू व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड? यस. सर कैंपस में कंपनियां हमको चुनती है, हम जो फॉर्म वगैरह भरते हैं उसके ऊपर से हम सिलेक्ट नहीं कर सकते? पहले कंपनीज आपको शॉर्टलिस्ट करती हैं. अच्छा, उसके बाद ही ना? उसके बाद आप सपोज 10 कंपनीज ने आपको शॉर्टलिस्ट करा, हाँ. उसमें से फिर आप 4 कंपनीज आप सिलेक्ट करते हो. ओके. It allows you to appear only for 4 companies, not more than that. ओके. उसमें भी ऐसा होता है सर, अगर टीयर 1 में नहीं हुआ तो ही टीयर 2 में आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसा करेक्ट. कुछ? करेक्ट. अच्छा. ठीक है. तो कैंपस में यस डेफिनेटली कैंपस का डिस्कशन भी एक अलग डिस्कशन है जिसको भी हम लोग आगे फ्यूचर में प्लान करेंगे. बट यस वो भी एक डिसीजन लेना रहता है आपको. अगर आपको 4 से ज्यादा कंपनीज ने शॉर्टलिस्ट कर लिया है तो अब आपको डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कौन सी 4 लेनी है, किसको छोड़ना है. ठीक है. नॉर्मली क्लास में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसमें 1-to-1 डिस्कशन करते हैं एक एक स्टूडेंट के साथ. आई इंडिविजुअली स्पीक कि लाइक आप ये छोड़ दो, ये रख लो, ये छोड़ दो, ये रख लो, ऐसे करके. ठीक है. तो आई थिंक डोंट वरी अबाउट दैट, दैट विल डेफिनेटली बी कवर्ड. ओके. सो अगर मैं जिन लोगों ने नहीं अटेंड करे थे प्रीवियस, आई विल जस्ट क्विकली टेल यू that pre-results, yes, we will be having super 30 batch, right? So that batch is for 30 students only. Okay, उसमें हम 30 से ज्यादा students नहीं लेंगे. और post results it will be super 60 batch, right? उसमें will not take more than 60. 21 days we will be doing the program. 15 is the core this thing, and 6 days is for revision purposes, right? Revision, mock interviews, mock GDs. Coverage is of course is covering each and everything starting from your resume, interviews, articles of experience, India's audit, HR interviews, investment banking, corporate finance, GST, income tax, aptitude based questions and group discussions, right? So ये basically overall coverage. इसमें बस स्पेशल बात यही है कि आपको टेक्निकल क्वेश्चंस रेफर करने की जरूरत नहीं है, राइट? वंस वी विल डिस्कस इन द क्लास, then you do not have to go back and again have to study technical questions. Because मुझे ज्यादा students like I tell you, like when we started initially the focus was more on soft skills, right? हम लोग interviews, resume इसके ऊपर ज्यादा फोकस करते थे. फिर धीरे धीरे like we realize that companies का फोकस टेक्निकल इंटरव्यूज पर ज्यादा है. अगर आपकी लैंग्वेज थोड़ी इधर उधर भी होगी तो चल जाएगा, पर आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, आपकी थॉट प्रोसेस गलत नहीं होनी चाहिए.
आपको इंग्लिश बोलने में दिक्कत आ रही है, थोड़ा बहुत आपने ऊपर नीचे कर दिया, इट इज फाइन, लेकिन टेक्निकली उनको ये नहीं लगना चाहिए कि यू आर नॉट प्रिपेयर्ड. So that's why like we keep it very strict, and 70% we focus on technical skills. That's why accounting standards are discussed. Okay. And not only one session, right? We cover questions itself. So almost in class, we cover more than 140, 150 technical questions. Okay, like these ones, how to value and startup and all those. Okay, and yeah, so that is the plan. Okay, now next next batch, I believe we will start somewhere in the first week of December. Although dates are not yet finalized, but please we'll try to finalize it as early as possible. Some of you may be interested because I've got some interest from your side related to recorded sessions as well, right? उन लोगों को था कि हम लोग recorded sessions चाहते हैं, ठीक है? तो recorded sessions अगर आप करते हैं attend, so recorded में आपको एक benefit ये रहेगा that you can attend the live session after you qualify, right? So if you will want to start your preparation, go for recorded and post your results. You can join the live batch also without any additional cost. तो उससे आपकी initial start हो जाएंगी practice, because that those recorded covers whatever we have just discussed. Okay, it's a 50 hour of the sessions, which includes all these points related to technical questions, audits, GST, income tax, everything. So एक first hand आपकी preparation अभी हो जाएगी, आप अपने personal level पे preparation कर पाओगे, और post qualification if you want you can attend the live session as well, right? So that is an option available with everyone. All right, so this is about the classes and sessions. Yes, if you have any further questions, you can definitely get in touch with our office. All right, now coming back to the campus points, right? Campus quiz. So पिछली बार के जो winners थे, right? I don't know whether they are there today or not, but we distributed few prizes. Okay, so it's your responsibility that please drop a message on our office number, writing your Google Pay number or Phone Pay or Paytm, whatever number, so that we will transfer the cash prize plus the discounts that we offer in our regular package, regular courses, right? So you have to do that, right? We have got almost 2 or 3 students who sent the messages. Okay, so same thing is for you also. आज आप लोग campus की जो quiz हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, उसमें participate करो. And then let's see. Okay, just a moment. Yeah. All right, so the first question which I already asked, okay, that is the first question. In the context of investment management, what do you understand by buy side and sell side? What is buy side analyst and what? आंसर लिखना है या बोलना है? बोलना है आपको, अनम्यूट करके अपना नाम बताइए और बोलिए. वंदना ओझा. हाँ वंदना बोलिए. बाय साइड यानी जो कंपनी अक्वायर करना चाह रही है दूसरी कंपनी को. ओके. और सेल साइड यानी जिस कंपनी को हम खरीद रहे हैं. नहीं, प्रैक्टिकल एग्जांपल दीजिए. बाय साइड एनालिस्ट क्या करेगा, सेल साइड एनालिस्ट क्या करेगा? बाय वाला प्राइस कम से कम चाहेगा और सेल वाला ज्यादा से ज्यादा प्राइस एक्सपेक्ट करेगा. नहीं नहीं नहीं. What is the role of a buy side analyst and what is the role of a sell side analyst? मेन तो दोनों का वैल्यूएशन ही होगा इंडिविजुअली. नहीं नहीं, सोचो आप.
Okay, please think before answering, right? That is more important. And try in all our sessions that assume that it is interview question. So how will you answer in an interview? Okay, वो practice regular basis पे करिए. Okay, और answers? Yes, any other one? Any other answer? Quickly. Otherwise ये time barred questions है. एक टाइम के बाद मुझे लगेगा कि आप गूगल करके सर्च कर रहे हो, ठीक है, तो फिर मैं उसको टाइम बार कर दूंगा. बोलिए. इतनी देर में किसी ने सर्च नहीं करा. आई एम सरप्राइज्ड. मैंने पहले ही बता दिया था कि आई विल बी आस्किंग यू बाय साइड एंड सेल साइड. ओके, चलिए, ग्रेट. एनीवेज, अब तो टाइम बार हो गया. ये बताइए. गूगल करके जिन्होंने सर्च करा हो. ओके, व्हाट इज बाय साइड एनालिस्ट, व्हाट इज सेल साइड एनालिस्ट? यस. Buy side analyst will value on basis of replacement cost and sell side analyst will value on basis of NRV. Okay. Okay, so ठीक है. वो लोग करते क्या है, राइट? ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट दे डू. ठीक है, तो ये आप समझो. ओके, बाय साइड एनालिस्ट मींस अ पर्सन हु इज basically, for example, I have 10 lakhs in my pocket. I come to you, okay, please suggest me where should I invest these 10 lakhs. This is called as buy side analyst. अगर आप मुझे गाइड कर रहे हो कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट करो, आप क्या खरीदो, आप गोल्ड खरीदो, आप म्यूचुअल फंड खरीदो, आप रिलायंस का शेयर खरीदो, तो ये कौन हो गया जो आपको गाइड कर रहा है ऑन इन्वेस्टिंग एंड ऑन बाइंग? बाय साइड इन्वेस्ट. क्लियर है सभी को? लेकिन मैं आता हूँ आपके पास और मैं बोलता हूँ कि सी लाइक आई हैव अ कंपनी. उस कंपनी को पैसों की रिक्वायरमेंट है. दैट कंपनी इज इन नीड ऑफ फंड्स. कैन यू अरेंज मी फंड्स? So you will ask me, you want debt, you want equity, what you want, right? You want some bonds, what do you want to issue? Okay, मैं बताता हूँ कि okay, like this is my preference. So now once you will do this for me, you will help me to raise equity, you will help me to raise funds. Okay, what you are doing? You are selling on my behalf. What you are selling? You are selling my equity share, or maybe you're selling my selling in the sense issuing. Okay, not exactly selling. So this is called as sell side analyst. समझ गए आप लोग? दोनों में स्किल सेट बिल्कुल अलग है. एक में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और दूसरे में आप मार्केट से पैसा रेस कर रहे हो. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, बाय साइड एनालिस्ट एंड सेल साइड एनालिस्ट. ऑल राइट, कुछ क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आप लोगों से पूछ चुका हूँ. ठीक है, ओके, आज हमने जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की बात करी है. ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का एक और क्वेश्चन लेते हैं. ओके, हाउ डू यू वैल्यू कॉस्ट ऑफ इक्विटी? और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं. चलिए पहले ये क्वेश्चन पूछता हूं मैं, लाइक हाउ डू यू वैल्यू कॉस्ट ऑफ इक्विटी? Sorry, not value, how you compute. Sorry, my question is how do you compute? Hello. Yes. Sir, Vipul Jinda here. Yes, Vipul.
Sir, cost of equity is basically the expectation of the investor that what return they want to gain from their investment. So, I guess cost of equity shall be computed basis on if there is a growth plan in the investment, then we can compute it with the IRR of the growth, that how much investment will be it get generated in the future. Or if it's a dividend plan or something like that, then we can compute the NPV of the dividend that we will get from the investment, and basis on that the discounted price of the dividend should be compared with the investment, so we will get the cost of equity. Dividend discount model, right? Okay. Yeah. Good try. Yes, good try. ये आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है ये इसका क्या मतलब है? Sir, it's basically a knight from a chess game, the horse. अच्छा. तो ये इसने शर्ट पहन रखा है कुछ मतलब कुछ इसमें is there anything special क्या? किसी No, मूवी में बताया क्या ये वाला? Yeah, it's basically a character from some cartoon. I don't know, but as I like chess, so I just put it on my DP. Oh, okay, great. चलिए, so good job, Vipul. It was a good answer. Although I have got some other answers as well, but again, like you people are shying away, unmuting yourself and not giving the answer. Still, like you will be the winner only if you will speak, right? Writing इंटरव्यूअर को आप क्या लिख के आंसर दोगे? मेरा सिंपल क्वेश्चन है आपसे. लिख के नहीं दे सकते हो ना, आपको उनको बोलना पड़ेगा. तो जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, बोलोगे नहीं, तब तक इट वोंट मेक सेंस. Although I got answer from Harsh, Shikha, and Ashutosh. Okay, well done. All three of them have given one answer, that is CAPM model, capital asset pricing model, which is the right answer. Yeah. Capital asset pricing model. What is that? It is RF plus RM minus RF into beta. Yes, this is how you do that. Okay, good job. Your mic is not working. Okay, तो ये तो चेक करो आप पहले, right? Do it in advance. एक पूरा सेशन हम लोग करते हैं how to give virtual interviews. ठीक है, उसमें ये सबसे पहली बात करते हैं, इंटरनेट एंड माइक. सबसे पहले ये चेक करना है आपको, is it working or not. ठीक है, तो आज आप याद रखोगे, अगर मैं बोलूंगा कि आप केवल इस कारण से आपको प्राइस नहीं मिला, तो आप याद रखोगे, आपको माइक सबसे पहले चेक करोगे आप. ठीक है, मैं आपको बताता हूँ एक रियल इंसिडेंट. उसमें एक स्टूडेंट ने पूरा जीडी माइक म्यूट करके दे दी. समझ रहे हो आप कितना बड़ा ब्लंडर था वो. और कोई भी हेल्प नहीं करता ऐसे केस में, कंपटीशन इतनी ज्यादा होती है. वो बोलते जा रहे थे, राइट, जैसा कि होता है ना न्यूज डिबेट में, तो बहुत ज्यादा बोलता है उसको म्यूट कर देते हैं, तो वो अपना माइक ही अनम्यूट करना भूल गए. तो बोलते जा रहे थे, राइट, बट रजिस्टर ही नहीं हुआ. ठीक है ना, तो डोंट मेक दिस मिस्टेक. यस, ये सभी के लिए है. जब भी आप वर्चुअल इंटरव्यू दो, ऑनलाइन इंटरव्यू, सबसे पहले टेस्टिंग एंड ऑल डू इट. या ओके, सो लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं. ठीक है, आज एक डिफरेंट क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे जो अब तक मैंने नहीं पूछा था. दिस इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू टैक्सेशन. ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेशन. ठीक है, सो अभी आपने लेटेस्ट में कौन सा सेक्शन देखा है जो इंट्रोड्यूस हुआ है रिलेटेड टू टीडीएस? 194Q. 194Q. Yeah. What is that about? So it's basically the buyer has to collect TDS from the seller if his purchases are more than 50 lakh, amounting more than to 50 lakh in a year, and his turnover in the previous year is more than 10 crores. So he will collect TDS at the rate of 0.1% over the any excess amount over 50 lakhs. Okay. 194Q. इसके बाद और कौन सा है? 194Q को टाइम हो गया थोड़ा. Yeah. अभी कौन सा आया था लास्ट?
सबसे रिसेंट में कौन सा आया है? यस एनीवन जो टैक्स के चैंपियन लोग हैं, बताइए। हेलो। हाँ बोलिए। यस 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 प्लीज, एनीवन। ऑलराइट, कहीं कुछ माइक में हो सकता है आपको प्रॉब्लम आ रही हो। यू कैन राइट इट ऑल्सो, ठीक है, मैं आपको, यू हैव द ऑप्शन टू राइट इट ऑल्सो। 194 O TDS on purchase, 194 R, very good. Nawaz, fantastic. Yes, so great job. बताइए नवाज, what is 194 R? Okay, anyone, ठीक है, जो भी बताएंगे वो what is 194 R, they will have a prize. Okay. ओके सो ठीक है, मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ 194 R। आप लोगों को ही इसको रीड आउट करना है, समझना है बेसिकली कि 194 R कैसे आ गया। मतलब सब चीजों को तो TDS डिडक्ट हो रहा था, तो फिर 194 R एडिशनली लगाने का क्या फायदा है, ठीक है। तो एनीवेज, गुड ट्राई, ऑल्दो एज सच मुझे आज क्लियर विनर्स नहीं मिले हैं, राइट। मतलब किसी ने आधा आंसर दिया है, किसी ने लिख के आंसर दिया है, ठीक है। तो मैं आज कोई विनर इसलिए डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को याद रहना चाहिए कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं, ठीक है, ताकि ये गलतियां आप इंटरव्यू में रिपीट ना करो। ओके, पहली चीज, यू नीड टू बी अपडेटेड। जो भी आप के सामने सब्जेक्ट्स हैं, अपने आप को सिलेबस तक रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है। उसमें जो चेंजेस हुए हैं वो खास तौर पे आप पढ़ो। अभी 2 दिन पहले ही हम लोगों ने एक स्टूडेंट को तैयार किया है, उनका इनडायरेक्ट टैक्स का इंटरव्यू था और EY में, और उनसे जो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन लेटेस्ट अपडेट्स को लेकर थे। वो उनके सिलेबस में नहीं था, लेकिन जो अपडेट्स अभी के हैं, ठीक है, तो आप लोगों को अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है। दूसरा, जब आप आंसर दो तो बोलकर आंसर दो फॉर योर प्रैक्टिस। और थर्ड इज लाइक ऑलवेज चेक ऑल दीज थिंग्स लाइक माइक एंड ऑल। Okay, great, guys. So it was again nice talking to everyone here, and I definitely believe that you people are utilizing your time the right direction. जाते जाते एक बार if you can just tell me कहाँ कहाँ पे आप क्या क्या कर रहे हो अभी, how you spent your last few days after exams, 10 दिन में क्या क्या करा है आप, you can write it, you can simply unmute yourself, कैसे भी आप बता सकते हो। सर उसके रिलेटेड नहीं है, पर एक दूसरा डाउट है। डाउट नहीं, पहले बताओ आप लोग वेर यू आर स्पेंडिंग योर टाइम। अभी तो इंटरव्यू का जो आपने बोला था वही पढ़ने में टाइम जा रहा है। पहले तो FR का ही पढ़ रहे हैं, 115 और 116। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कि और DT में भी ऐसा थोड़ा, क्योंकि पहले अटेम्प्ट क्लियर हो गया था तो अभी थोड़ा गैप है, तो वो ही रीडिंग आउट वेरी चल गुड, रहा है। वेरी गुड। और बताइए, एनीवन एल्स? कुछ भी अगर आप प्रोडक्टिव कर रहे हो, ठीक है, ये सब तो आई एम श्योर वेब सीरीज और ये सब तो आप देखे रहे होंगे। तो अपार्ट फ्रॉम दैट कोई प्रोडक्टिव, किसी ने भी कोई नया इनिशिएटिव लिया हो? चलिए, एनीवेज कोई बताना नहीं चाह रहा है, ठीक है, तो 2 बातें हो सकती है, या तो आपने इनिशिएटिव ले लिए हो और आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते होंगे, और या फिर आप के इनिशिएटिव्स कुछ अलग ही लाइंस पर होंगे, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। एनीवेज, तो चलिए, ग्रेट, कीप अप द गुड वर्क, एंड most likely we will have our next session, okay,
again on next Sunday. I'll keep you posted about that. Yeah. So thank you very much, and all the best to everyone.